25, they can get. Supposing a new country or a country opens an embassy today, you can get refund. You have to go to government and say notify under section 55 so that we are able to avail GST refunds. Entitled to refund of tax paid by it. क्या टैक्स मिलना है जो उसका टैक्स इनवॉइस उसको इश्यू हुआ जो भी इनवॉइस इश्यू हुआ उस पे जो टैक्स अमाउंट लिखा है पेड बाय इट सपोजिंग देयर इज ए 1 year credit he has not paid tax the word used is paid not payable so till he ensures that payment has been made the proper officer can ask कि आपने पेमेंट किया भाई कहते नहीं जी वो हमारे तो उधार चल रहा था वो साल के बाद कराए थे साल बाद पढ़ लेना right. But this has a serious implication when you go to limitation. May make an application for such refund in such form as before the expiry of 6 months from the last day of the quarter in which supply was received. Right? Supposing the first quarter date is 2nd April, then you can go to December. 6 months from the last day of the quarter. You can go up to December. उसके बाद दिस इज टाइम बैक ठीक है ना तो क्या देखना आपको कि जो वो रिफंड मांग रहा है क्या वो सेक्शन 55 का नोटिफिकेशन है जहाँ यूनाइटेड नेशन जो 47 के एक्ट है इसमें उसका कोई नाम है नहीं है तो उसको रिफंड नहीं मिलता अच्छा जैसे आप कह रहे हैं कि 1 year का उनका क्रेडिट पीरियड है तो उस केस में 6 मंथ का रहेगा या वो तभी तो कहना कॉम्प्लिकेशन है ना दे मस्ट मेक पेमेंट टू गेट रिफंड जो सप्लायर को भी सेफगार्ड किया गया ना कि सप्लायर से वो टैक्स दे दिया आपको उसको टैक्स ही नहीं मिला हर जगह ऐसी प्रोविजन है पूरे वर्ल्ड में द वर्ड इज पेड नॉट पेएबल नॉट चार्ज नॉट चार्जेबल द वर्ड इज पेड मीन्स समथिंग हैज हैपेंड इट्स अ पास्ट टेंस देयरफॉर दिस टैक्स मस्ट हैव बीन पेड अब पेड पर कुछ लोग गवर्नमेंट को पे हो गया अब गवर्नमेंट को पे हो गया तो को पेमेंट होनी चाहिए so there is a little confusion on this particular issue but paid means tax must have been paid जैसे 1 साल का क्रेडिट है we take your argument further right सप्लायर ने टैक्स दे दिया तो गवर्नमेंट has been given tax right supposing supplier has not paid the tax then will you give refund not possible इनपुट ही नहीं मिलता ना आपको और सर पार्टी एजेंसी से दे दिया यूनो वगैरह में तो उस केस में सप्लायर ने पे नहीं किया तो उस केस में क्या हो रहा है रिफंड नहीं मिलेगा ना paid tax must have been paid to the government paid means whether in cash or by adjusting ITC 16(4) में लिखा है कि how you pay tax either you are just eligible input tax credit or pay in cash दोनों में पेमेंट होती है but must have been paid supposing आपने बिल चढ़ाई नहीं 3 में जो भी प्रॉपर ऑफिसर मांगेगा आपको देना होगा then you can get the refund 3 now I told you first 3 sections are very important subject to provisions of section 10 go to section 10 first subsection 10 where any refund is due under subsection 3 subsection 10 to a registered person subsection 3 is not available to any person it's available only to registered person who has defaulted in furnishing any return or who is required to pay any tax, interest or penalty. So this is your question. Penalty is here. Penalty which has not been stayed by the court, tribunal or appellate authority by the specified date, the proper officer may withhold payment or refund due until the said person has furnished the return or paid the tax, interest or penalty as the case may be. Deduct from the refund amount any tax so and so, but so and so. Explanation. For the purposes of this subsection, the expression specified date shall mean the last date for filing an appeal under this act. So let's understand first section 10 का क्या मतलब है. आपके ऊपर उसने सेक्शन 62 की असेसमेंट कर दी, उसने आपका 4 करोड़ की डिमांड निकाल दी, आपका रिफंड है 5 करोड़, आपने 2 महीने में अपील दाखिल नहीं की. कंडोनेशन इज नॉट अ पीरियड ऑफ स्टैट्यूटरी अपील, दैट्स ए डिस्क्रिशन, इट्स अ कंसेशन गिवन. आपका 2 महीने का पीरियड है, 107 में आपको अपील फाइल करना है, वो खत्म हो गया. 3 महीने का
3 months, not 90 days. 3 months? 3 months and 1 month. Oh, sorry. I'm remembering this reduction 2 months, 3 months, man. Okay. 3 महीने है, 90 days नहीं है, 3 months है. बहुत डिफरेंस हो जाते हैं 90 कैलेंडर में से बहुत फर्क होता है. तो 3 महीने में आपने अपील फाइल नहीं की, एवरीथिंग इज ओवर. यू कांट टेक 1 month रिकून करो. 1 month इज फॉर कंडोनेशन, नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैट्यूटरी अपील पीरियड. तो जो आपका 5 करोड़ का रिफंड था वो 4 करोड़ काट के आपको 1 करोड़ पैसे देगा. दिस इज वन सिनेरियो. Second is, supposing you go to appeal, deposit 10%, then remaining is automatically stayed. By application of 107 subsection 7, the demand is automatically stayed. You don't have to get a stay order. In that case, you will get full refund back. That is the meaning of subsection 10. That is, अगर आपके ऊपर कोई डिमांड निकाली है इंटरेस्ट टैक्स और पेनल्टी की, जो आप पेनल्टी वाला केस करेंगे, उसमें आपका रिफंड है. उस केस में अगर डिमांड आपकी 4 करोड़ की थी, रिफंड 5 करोड़ का है. अगर 4 करोड़ की अपील आपने 3 महीने के अंदर दाखिल कर दी बाय डिपॉजिटिंग 10%, द रिमेनिंग डिमांड इज ऑटोमेटिकली स्टेड. नोबडी कैन आस्क फॉर रिकवरी ऑफ दैट मनी अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस. यू विल गेट फुल 5 करोड़ बैक. अगर आपने 3 महीने में अपील दाखिल नहीं की, then that 4 crore can be adjusted by the property officer and he will pay you 1 crore. That is the meaning of subsection 10. Now come to subsection 3 back. A registered person may claim refund of at the end of any tax period. May claim refund of any unutilized input tax credit at the end of any tax period. So, जब भी आपको क्लेम करना है, क्लेम करो. चॉइस इज योर्स. टैक्स पीरियड इज नॉट फॉलोड बाय फॉर द रेलेवेंट ईयर. तो अभी उन्होंने कुछ बोला था ना कि ईयर कंबाइन कर सकते हो. ऐसे कोई सर्कुलर था रिफंड का. हाँ, 1 साल का इकट्ठे ले सकते हैं. साल का इकट्ठे ले सकते हो ना. ऐसा कुछ हमने किया था. पहले क्या होता था कि मंथ वाइज आपको 17-18 का लेना पड़ेगा, फिर 18-19 का लेना पड़ेगा. अब आप ईयर्स भी कंबाइन कर सकते हैं ना. मल्टीपल ईयर्स की है. नहीं, क्लैरिफिकेशन केम लेटर, पहले नहीं होता. पहले नहीं हुआ. Okay. Now subsection 3 has a proviso. So you can claim refund of any amount, including interest as penalty or a demand which has been stayed by the court at the end of any tax period, provided no refund of unutilized ITC shall be allowed in cases other than the two you have done. One is zero resupplies made without payment of tax. So only when you issue LUT, only then cash refund is possible, otherwise cash refund is not possible. जो आपने IGST में अपने टैक्स देके किया, वो आपको कस्टम वाले रिफंड वापस करते हैं. It's not given by central government. Custom people give you automatic refund back, जो भी उनका प्रोसेस एप्लीकेशन वगैरह है. So unutilized ITC का रिफंड जो आप सेक्शन 54 में मिलेगा, एज पर सबसेक्शन 3 proviso, only when zero supply is made without payment of tax. That is LUT. So what is zero rating? When you export goods or services or both. Export means when you take out these goods or services both out of India. You yourself, not penalty made exports. Second is when you make supply to any SEZ unit or developer, subject to provisions of those acts. ये zero rated है. अगर आपने इन दोनों में LUT यूज की है, then subsection 3 proviso is applicable to you. You can get a refund in cash. Second, this is very critical. इसमें भी कुछ दिन पहले राजस्थान हाईकोर्ट की जजमेंट भी आई है बहुत अच्छी. I like the judgment. Where the credit has accumulated on account of rate of tax on inputs being higher than the rate of output supplies other than nil rated or fully exempt supplies. Other than nil rated or fully exempt supplies, except supply of goods or services both as may be notified by the government on the recommendation of the council. This is inverted duty structure. That is, अगर आपने आपके इनपुट 10 करोड़ के थे, वो 8% की थी, 18% की थी. आपकी आउटपुट सारी 28 है. ऑटो पार्ट्स फॉर एग्जाम्पल, इट इज 18%, ऑटो पार्ट्स 28%. तो 10% इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हुआ. उसको लेने के लिए चीजें आपको पहले पिछले से निकालनी है, जो नाम एक्सक्लूजन है. जल्दबाजी नहीं करनी कि भी आपका 10% का 1 करोड़ रुपया है, उसमें देखो 1 करोड़ में से ये अदर देन सप्लाई ये तो नहीं है कहीं बीच में.
वहां तो उसको निकाल दो, अकॉर्डिंग उसका टैक्स पे कंपोनेंट में बाहर निकाल देंगे आप, बाकी का आपको रिफंड मिलेगा। इन मल्टी ड्यूटी स्ट्रक्चर देयर वर मेनी जजमेंट्स लीडिंग बाय गुजरात हाई कोर्ट कि इवन ऑन सर्विसेज दिस कैन नॉट बी डिनाइड। Madras High Court had a different view, Gujarat High Court different view. Supreme Court confirmed it's not available on services. That is the law. So now there is no confusion at present. Though in the 47 amendment now they have allowed. Now they are amending the act in GST 47 council meeting they have allowed. But this amendment is not retrospective. Any judgment by court is always retrospective. Any amendment in law till made retrospective is not retrospective. It's applicable from the date when it's notified. But all law declared by High Court or Supreme Court is retrospective. They interpret as the law existed. 40 साल बाद भी कोई जजमेंट आएगी तो 40 साल पहले लाया था उसकी इंटरप्रिटेशन है वो. Unless court says in order to avoid confusion that this judgment shall be applicable from this date. And this power is only with the Supreme Court. High Court cannot use this power if this judgment shall be applicable from this date. High Court has no power under Constitution to do this. Only Supreme Court can do it. So, subsection 3, you can claim refund at the end of any tax period, provided no cash refund shall be given to you except for the following: zero-rated or inverted duty structure. Once inverted duty structures refunds are allowed, no proper officer can disallow it on any ground. If you claim this is a very difficult proposition. जब भी आप क्लेम करें, बहुत सारे नोटिफिकेशन है जहां ITC is denied. Output is 5%, input is 28%. जैसे input tax credit will not be given to you. 8-10 नोटिफिकेशन रहते हैं. जो भी चीज आप डील करते हैं, you have to make a search and say कि whether there is a notification to this effect. If there is notification, don't claim. If you claim it's given to you, you have claimed a erroneous refund. It will attract 73-74. You have to be very careful. जब भी इनवर्टेड स्ट्रक्चर का आप रिफंड क्लेम करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ गुड्स और नाउ फॉर सर्विसेज आल्सो, आपको पहले देखना इधर कॉरस्पॉन्डिंग नोटिफिकेशन फॉर द एक्टिविटी विच यू आर डूइंग विच बार्स इनपुट टैक्स क्रेडिट. फॉर एग्जांपल रेलवेज, देयर इज अ नोटिफिकेशन कि पार्ट्स कवर्ड बाय चैप्टर 8609 shall be 5% without ITC. Salva. Nobody can give you because the government has the power to say जहाँ देना है जहाँ नहीं देना. Output is 5%, so you are free. आपने क्या करना है, इम्पोर्ट करके भेज दो, जो भी करो, टैक्स तो वही लगना है, इम्पोर्ट करो यहाँ बनाओ, तो उनका ITC आपको नहीं मिलेगा. Similarly, for certain textile industries also there are some notifications where ITC has been barred. आपको ITC नहीं मिलेगा. Restaurants 5% no ITC. So they buy capital goods, they render services, no ITC. Therefore, before you claim any unutilized input tax credit, 17(5) has to be carefully gone through. ये सारे notification 75 में the category of apportionment of tax credit. आपको देखना है कि ऐसे तो नोटिफिकेशन तो नहीं. रियल एस्टेट है, बिल्डर्स हैं, नहीं है, दोनों स्कीम है, लेकिन मेरे ख्याल 1-1-19 के बाद तो एक ही स्कीम है, 5% है, कुछ 12 चलती है, एक ही है मेरे ख्याल, अभी एक ही. सो सबसेक्शन 3 हैज 3 implications. पहला आपको सबसेक्शन 10 पढ़ना है कि भी अगर आपके पास कोई डिमांड है, इंटरेस्ट टैक्स और पेनल्टी. डिमांड मीन्स डिमांड हैज बीन क्रिएटेड बाय वर्च्यू ऑफ लॉ और उसका आपके पास स्टे नहीं है, तो जितना आपका रिफंड है सारा उसमें एडजस्ट हो जाएगा. यहाँ अगर आपने अपील उसकी फाइल नहीं की 3 महीने के अंदर, फिर तो वैसे ही बात खत्म है, राइट. दोनों केसेस में प्रॉपर ऑफिसर को जितनी डिमांड है आपके रिफंड में से घटाकर आपको रिफंड देगा. नाउ हियर इज अ बिग क्वेश्चन, व्हाट अबाउट इंटरेस्ट? Keep this in mind when we start 56 will tell you इसका इंटरेस्ट का क्या होगा. अगर उसने 4 करोड़ एडजस्ट कर दिया, आपको 1 करोड़ दिया, कल को 4 करोड़ में अपील जीत गए आप, उसका क्या होगा? इंटरेस्ट खा जाएंगे क्या? देना पड़ेगा देना पड़ेगा ऐसे तो देते तो है
हमारे तो कश्मीरी पंडितों को वहाँ मकान देने पड़ेंगे, दिए ना हाँ देना पड़ेगा। Okay, then there is a second proviso, provided further that no refund of unutilized ESC shall be allowed in cases where the goods exported of India are subject to export duty. Windfall gain in income petroleum products, they have put an export duty. The funds are gone. So no petroleum company can get refund on the things which they export. What duty lagegi na? Though they categorize in windfall tax, but the scheme of windfall tax was exercised through export duties. So if your client is exporting something, you again have to see whether what is exporting is subject to export duty. है तो आपको रिफंड नहीं, आप नहीं देते, इस ऑल ओवर कैश रिफंड नहीं, बाकी मिलेगा, कैश रिफंड नहीं मिलेगा। तो आप देखो एक रिफंड एप्लीकेशन पहले से फाइल करवा रहे हैं, आप कितना कुछ देखना और कितने पैसे आपको लेने चाहिए। दिस इज ऑल लीगल, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग एल्स फ्रॉम माय माइंड, कि आपको देखना है कि उसमें एक्सपोर्ट ड्यूटी वाले को रिफंड नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, वन मोर प्रोवाइडर, no refund of gain shall be allowed if the supplier of goods services both avails the drawback in respect of central tax or claims the refund of individual tax paid on such supplies. So go back to definition of central tax. Section 2. Levied under section 9. So what is claiming? He should not claim drawback of central tax. क्या definition है central tax की? CGST पूरी पढ़ो, CGST. means the central goods and service tax levied under section 9. तो अगर सेंट्रल टैक्स में उसको कोई ड्रॉबैक मिला है, he takes refund is barred. इसमें सर्कुलर्स हैं, subject to those circulars, whatever interpretation they have, or if he has claimed unutilized of IGST paid, refund नहीं मिलेगा। तो ये तीनों सबसेक्शंस आपको सेटिस्फाई करने हैं बिफोर यू से कि योर RRB 01 कैन बी पुट ऑनलाइन। ये आपको अपनी वर्किंग फाइल में बना के रखनी चाहिए, आपको कभी लिटिगेशन होगा आपको वर्किंग चाहिए। एंड ऑलवेज एज ए प्रोफेशनल यू शुड बी वेरी क्लीन पर्सन, मेक कंप्लीट फाइल, ताकि कल को द क्लाइंट डजंट वांट यू गिव समबडी एल्स, यू कैन हैंड ओवर ए कंप्लीट फाइल। सर जी हमने इसमें करा मैन यूज तेरा कौन करेगा देखेंगे, नो। That means कि अगर जैसे मेरा तीनों हेड्स में वो है IGC अवेलेबल है, IGST में, CGST में, IGST में, और IGST का मैंने रिफंड वी आर टॉकिंग ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर आपने IGST का रिफंड मिला, आपको कैश रिफंड नहीं मिलेगा। दे आर यूजिंग वर्ड ओनली IGST ना, दैट प्रोवाइड हो। हाँ हाँ। तो सर एक्सपोर्ट को विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स करने में अच्छा उसी का प्रॉब्लम नहीं वही मैं पूछने की फिर क्यों लोग इसके साथ करते वर्किंग हैं? कैपिटल। आपने पहले सप्लायर को पैसे दिए, आप गवर्नमेंट को पैसे दोगे, फिर इधर रिफंड लेना है आपको, वो भी इतना इजी नहीं है। देयर पुट ए रेड फ्लैग ऑन योर फाइल के सर इसकी एक्सपोर्टर, और क्या क्या देखेंगे भगवान जाने। तो इसे डिसीजन एक्सपोर्टर हैज टू कॉल, वी कांट एडवाइस देम। इसमें हम टैक्स देके कर रहे हैं एक्सपोर्ट, उस केस में तो आपका इनपुट खड़ा ही रहेगा। मान लीजिए मेरा सारा मैं इसी तरीके से करूं तो इनपुट नो रिफंड, दो रिफंड तो नहीं मिल सकते ना आपको। वही मैं इसीलिए कह रही हूं ना। व्हाट इज और फिर तो आपको or one either you take this or you take this, you apply the second option in 54 वैसे जो है 16(2) में क्या आपके पास दो ऑप्शन है, LP पे ले लो या टैक्स दे के ले लो, अब वर्ड और है। मेरा ITC तो मेरा एक्यूमुलेट होता रहेगा। नहीं मैं तो कह रही हूँ कि मैंने ये है कि जो टैक्स पेड की बात कर रहे हैं वो आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन तो बैलेंस पे देंगे ना। अगर मेरी लायबिलिटी 1 लाख की है और ITC 90,000 पड़ा हुआ है तो आई विल हैव टू पे इन कैश 10,000। मैं वो नहीं कह रही, मैं ये कह रही कि मैंने एक्सपोर्ट किया, एक तो करा मैंने विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अगेंस्ट LUT, उसमें तो मुझे ITC का बेनिफिट मिल रहा है, मुझे यहाँ से वो मिल जाएगा। लेकिन मैंने यदि पेमेंट करके बैठा रह जाएगा वो पेमेंट जो IGST आउटपुट टैक्स कैलकुलेशन यू कैन एडजस्ट अगेंस्ट योर ITC ना, आप पहले कैश पेमेंट नहीं करना है। कैश पेमेंट कैश पेमेंट सिर्फ RCM है,
सर इसमें भी टाइम लिमिट 2 इयर्स होगी तो टैक्स पे करके हम रिफंड करेंगे। नो इसमें नहीं, वो तो आसान मिल जाता है आपको। योर 90% तो कस्टम देता है जब पेमेंट करते हो तो वो दैट टेकन एज एप्लीकेशन इटसेल्फ, दे गिव इमीडिएटली विद इन 10-15-90% डिक्लेयर कर देते हैं। कस्टम वाले देते हैं। रिव्यू एप्लीकेशन इसमें कोई issue नहीं है, इट्स एन ऑटोमेटिक एप्लीकेशन। ओके, लेट्स गो नेक्स्ट। सबसेक्शन 4, जो सबसे बड़ा RFD 03 के झगड़े वो सबसेक्शन 4 में है। The application shall be accompanied by such documentary evidence as may be prescribed। जो 8 चीजें वो सर्कुलर में लिखी हैं इनके, वो सारी आपको लगानी है। Shall be accompanied। अब the question is, अगर 8 लग गई, can he ask for anything else? If he has a query, मतलब can he issue a RFD 03 if all 8 all? He cannot. That was the issue of Jan International। जब उन्होंने रूल 90 सब रूल 2 को हाई कोर्ट ने इंटरप्रेट किया, कहता नॉटविथस्टैंडिंग डेफिशिएंसी मीमो यू शुड नॉट इशू। अगर तुम्हारा RFD 02 उसको इशू कर दिया, दैट मींस रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड। अब और क्या मांगना आपने? तो डेफिशिएंसी मीमो आपको 15 दिन में देनी तो नहीं थी, तो इशू दे पड़ना। वी कैन नॉट अलाउ यू अनदर इनिंग इफ नाउ इशू डेफिशिएंसी, फिर झगड़े शुरू करो आप। सो once the word used is shall be accompanied by if you are satisfied the requirement that have been prescribed in the circular issued under rule 90। वो जो 8 या 9 चीजें हैं वही डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। आगे चलिए, एंड द वर्ड इज एंड, तो दोनों आपको सेटिस्फाई करनी है। such documentary or other evidence including documents referred to in subsection 3, the applicant may furnish to establish that the amount of tax interest, if any, paid of such tax or arrears when paid relation to be ceremonially claimed or collected from or paid by him, and the incidence of such tax and interest has not been passed on to any other person। Go to section 33 first। क्या कहते हैं? Amount of tax to be indicated tax invoice and other documents। There is no backward calculation for section 33। Notwithstanding anything, it's a non-extended clause in this act or any other law for the time being in force, where any supply is made for a consideration, every person who is liable to pay tax for such supply shall prominently indicate in all documents relating to assessment, tax invoice and other like documents the amount of tax which shall form part of the price at which such supply is made। अब वो क्या कहता है आपका subsection 4, such document other evidence including documents of section 3। 33 deals with invoice। Supposing you have a duty paying document, कुछ ऐसे अदर डॉक्यूमेंट है जहाँ आपको डेबिट नोट है फॉर एग्जाम्पल, तो वहाँ आपको टैक्स लगाना, टैक्स कंपोनेंट चाहिए उसके लिए। तो द वर्ड इज 8 चीजें वो जो एप्लीकेशन में है, प्लस दिस डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट सेक्शन 33 यू हैव टू अनेक्स एंड रीड द लास्ट 1.5 line। Him and the incidence of such tax and interest had not been passed on to any other customer। This is theory of unjust enrichment। रिफंड आपको तभी मिलेगा अगर टैक्स आपने बायर से क्लेम नहीं किया। बायर से क्लेम कर दिया देन यू कैन नॉट गेट रिफंड। दैट इज द थ्योरी ऑफ मोदी मिल्स, थ्योरी ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, कि यू कैन नॉट एनरिच योरसेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सचेकर। फॉर एग्जांपल, वो आपको बताता है जी आप ये बताइए कौन सा टैक्स आपने हमने टैक्स चार्ज किया, मैं बाहर से चार्ज नहीं किया है, हमने खुद दिया ये टैक्स, पैसे मेरे वापस करो। फॉर एग्जाम्पल वो बाहर को चिट्ठी भेजता है, कहता है जी हमारा झगड़ा चल रहा है, सारा टैक्स हमारे से ले लिया उन्होंने। तो नाउ यू वांट टू से यू हैव क्लेम फ्रॉम द बायर फॉर जीरो रेटेड सप्लाईज और इन्वर्टेड टैक्स। हम दो चीज की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। सपोजिंग वो वी कांट कॉल इंपोर्टर, सपोजिंग देयर इज अ कॉरेस्पॉन्डेंस अवेलेबल व्हेन दे रेड यू कि इंपोर्टर ने जो आपको माल खरीदा उसे आपने टैक्स भी लिया। इट हैपन इन सर्विसेज, देयर आर कोलेटरल एग्रीमेंट वेयर टैक्स इज चार्ज ऑन सर्विसेज आल्सो, इंडियन टैक्स। उस केस में अनजस्ट एनरिचमेंट शैल अप्लाई। ही कैन रिजेक्ट योर रिफंड एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 4 बिकॉज द वर्ड इज द एप्लीकेशन शैल बी अकम्पनीड बाय सच डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एज बी प्रेस्क्राइब प्लस डॉक्यूमेंट सेक्शन 33 and other duty paying documents provided the incidence of tax has not been passed on to the buyer। that is theory of unjust enrichment। subsection 5 no there is a proviso 2 लाख वाला forget it, I am not interested in CA certificate, सारे फ्रॉड होते हैं वैसे।
If on receipt of any such application, the proper officer is satisfied that the whole or part of the amount claimed as a refund is refundable, he may make an order accordingly, and the amount so determined shall be credited to the fund referred in section 57. Let's go to 57. क्या कहते हैं? Consumer welfare fund. We need to read it. अब आपकी एप्लीकेशन चली गई. Application per se does not make you entitled to refund. You have only completed a initial part of the process by filing the refund application in the form prescribed, satisfying the requirements of section 4 of section 54. But he still has to proper officer still examine. तो आपको डॉक्यूमेंट देखता है, गलतियाँ निकालते हैं, इसे दीजिए 100 रुपये की जगह आपको 40 रुपये दूंगा, बाकी आपका नहीं बनता. किस प्रॉम्प्ट नहीं बनता? डॉक्यूमेंट में टैक्स नहीं लिखा. सेक्शन 17 हिट बाय सेक्शन 17(5) अपॉर्शनमेंट, आपने 17(5) में कुछ क्लेम कर लिया जो आपको नहीं मिलता था, बिकॉज दिस इज रिक्वायरमेंट ऑफ सब्जेक्ट टू सेक्शन 5 बट एक्सक्लूडिंग द एग्जम्प्ट सप्लाईज. 17(5) remains, then you have a problem. Then it's an appeal case. आपको लेना तो आगे चलो, otherwise accept it and finish it off. अब इंटरेस्ट भी आपको उसी अमाउंट में मिलेगा which he has determined, not on the amount which you have claimed in your application. So filing application per se does not entitle you to any refund. The fund amount still has to be determined by the proper officer under subsection 5 by an order. Order आते हैं आप, रिटर्न ऑर्डर. सर अगर ये हमने गल्फ क्रेडिट हमने उनसे क्लेम कर लिया था और उन्होंने उसको हमारे सेक्शन 57 में भेज दिया, तो क्या डिपार्टमेंट उसको हमसे इंटरेस्ट और पेनल्टी भी डिवाइड कर सकती है? इस पे डिबेट सिर्फ यही है जो लेटेस्ट हाई कोर्ट कहती है, इफ यू हैव यूटिलाइज्ड इट. मतलब मेरा यूटिलाइज तो हो गया, मैंने रिफंड क्लेम कर दिया तो मेरा डेबिट हो गया उस चीज़ के लिए. नहीं, आपको उसे डेबिट किया ना, उन्होंने आपको यूटिलाइज में ब्लॉक कर दिया उन्होंने अमाउंट का, आपने यूटिलाइज तो किया नहीं ना. बट इन माई व्यू इंटरेस्ट इज ड्यू. Once you claim input as credit in your return, you become beneficiary of that amount. It will not later lay your amount के I never intended to utilize, notwithstanding the later judgment of 2 high courts. Supreme Court in Swift में इन्होंने इसको पॉइंट को डिस्कस किया. I'm convinced on Supreme Court. There is my article of about 30 pages on this issue. Interest shall be payable. It will go to Supreme Court. Government is not going to leave this interest. क्या आपने 5 करोड़ रुपए क्लेम कर लिया, रियल एस्टेट वाले क्लेम किया सफारी की जजमेंट पर, जजमेंट उड़ीसा की दिल्ली वाले क्लेम कर रहे हैं, सारे सीएस करवा रहे हैं. मेरे पास कुछ पीछे आया था, मैं कहा सब मरोगे तुम, ये नहीं मिलेगा आपको. तो लेटेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैं, दे आर इंटरप्रेटिंग लॉ एज गिवन, नो लॉजिक. लाइक उन सर्विसेज क्यों नहीं मिलना चाहिए? गुजरात हाई कोर्ट की 100 पेज की जजमेंट थी, आपने क्यों नहीं दिया भाई? रद्दी कवाड़ है सारी जजमेंट, कानून में ये लिखा है. अब कोई हमने तो क्लेम किया था इन ऑर्डर वी डोंट बिकम टाइम बार्ड, मतलब किसी क्लेम का जॉइंट यूटिलाइज है, अभी क्लेम किया था बने की बात कुछ, क्योंकि द फ्रेज यूज इन 73 and 74 वर्ड इज wrongly availed or utilized. ये फ्रेज रूल 14 सर्विस एक्ट में था, विच लेटर ऑन अमेंडेड इन 2012 उन्होंने और को एंड कर दिया. अब इन्होंने फिर एंड नहीं लगाया, फिर और लगाया. How can you say the or judgment given by Supreme Court will not be applicable here? तभी कर्नाटक हाई कोर्ट की बैट में भी एक जजमेंट अलग थी, सर्विस टैक्स, बट सुप्रीम कोर्ट वी फॉलो सुप्रीम कोर्ट. Subsection 6. Notwithstanding anything contained in subsection 5. So section 6 overrules only subsection 5, not subsection 1, 2, 3 and 4. The proper officer may, in the case of any claim or refund or could serve you other than such category 725, refund on a provisional basis 90%. It's a provisional refund. Some people say it's confirmed. No, it is made. He may give, he may not give you. Subject to satisfaction. ये कहीं नहीं लिखा. If rule में ऐसी language है, the word shall is used, but rules cannot override act. That is why no court has given direction to give 90% refund as per law. But it is his discretion, and court cannot step into the shoes of a proper officer and decide कि आप दो या ना दो. तो 90% का provision है इसमें.
अब आगे चलो, refund of 90% of the total amount so claimed, excluding the amount of input tax credit provisionally accepted. To be. That's the input tax credit which is provisional. It's not a final. In such manner, subject to such conditions. So section 5 कहता है 90% अगर देना चाहे तो दे सकता है आपको रिफंड जब एप्लीकेशन के इमीडिएटली बाद, सब्जेक्ट टू दीज काइंड ऑफ डिडक्शंस व्हिच यू कैन मेक. अब वो कहते हैं जी आपके जो 20 सप्लायर हैं, 15 तो ठीक है, 5 और हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन. तो ये जो मैंने प्रोविजनल आईडी एक्सेप्ट किया था आपका, ये 5 का हम रिजेक्टेड. नाउ व्हाट विल हैपन? Now there are 2 appeals. One is of the refund rejection. Second appeal is the rejection of ITC claims of the supplier. आपको 2 अपीलें करनी है कि 2 करनी है, कोर्ट की 2 अपीलें करेंगे आप. एक तो रिफंड रिजेक्शन की आप जो भी रीजन आपके, since your claims have been rejected which you have claimed in your returns based on supplier tax invoices, so you have to challenge that also. ये जो रिजेक्शन किया वो गलत है. or whatever ABC reason you have in your view, you have to file both appeals. The proper officer shall issue order subsequent within 60 days from date of receipt of application complete in all respects. There is a judgment. I will just read 3-4 lines. Union of India Hamdard Box Labs 2016. It's under section 11BB Central Excise, same provision. इसमें Supreme Court has approved this judgment in Ranbaxy case. I will just read it. The seminal issue is whether there has been delay in grant of refund and consequently whether the respondent is entitled to interest. Keeping in view the enumerated fact that इस same provision आगामी 3 महीने या 60 दिन है, बस और कुछ फर्क नहीं है इसमें. Keeping in view the enumerated fact, the submissions canvassed and the provision referred to it is necessary to appreciate the principle stated in Ranbaxy case. In the said case, the question arose whether the liability of the revenue to pay interest under section 11BB Act commences from the expiry of 3 months from the date of receipt of application, that is RFD 02. वह आपकी application है, आपके मिल के तो हो गया, or the expiry of the said period from the date on which the order of refund is made. The question was कि जब हमने refund order 6 महीने के बाद दिया, उसके बाद अगर आपके आप नहीं देता ले लो. Question to Supreme Court was कि the provision is you have to give as per section 54(7) refund within 60 days. And this is also mentioned in Rule 90 Sub Rule 2. 7 दिन के बाद करोगे तो section 56(1) will operate. Same question mark in section 11BB Central Excise Act before Supreme Court. Then the applicant shall be paid interest as rate as may specify central government or expiry of period of 3 months from the date of zero application. The explanation appearing below provision 11 will introduce a dimming fiction that where the order of refund of duty is not made by Assistant Commissioner of Central Excise, then for the per section the order made by such higher appellate authority, the court shall be deemed to order made section 2 so and so. Manifestly, interest in 11B becomes payable if on expiry of period 3 months from the date of the application of refund, the amount claimed is still not refunded. Thus, the interpretation of section 11BB that can be avoided is that the interest under subsection becomes payable on the expiry of period of 3 months from the date of receipt of the application. There is no way they cannot pay you interest. Our language of 56(1), 54(7) is identical. इसीलिए इन्होंने सर्कुलर 124 इशू किया था कि आपको इंटरेस्ट देना है अगर आप 60 दिन में एप्लीकेशन डिस्पोज नहीं करते. Wherever they have not disposed the application in 60 days, move a petition, claim interest. They will have to give. There is no way they can refuse. The only exclusion is what is allowed in section 54. आपने इंटरमीडिएट लेट दी, ये दिया, वो दिया. That period also they have to determine, not you. That also can also be challenged. वो कहते हैं जी आपकी मेरी आपकी अपनी घूमगी, मुझे नई एप्लीकेशन दे दो. और 2 महीने बाद इस एप्लीकेशन को देखते हैं, कहते हैं 2 महीने आपने लगाए थे, हमने तो लगाए थे, मैं तो दे दी एप्लीकेशन तेरे को, तूने कमा दी, हाउ कैन स्कूल दिस पीरियड. Now there is another judgment by Supreme Court. Scientific Asia versus Union of India.
Sandvik Asia versus Union of India. You may be shocked. Interest on interest, Supreme Court gave. Interest on interest. The question before Bombay High Court was where refund was given late, therefore interest was also given late automatically. This company, through Harish Salve, they claimed that since this amount was found excess, right? ये जो मेरा interest amount मेरे को आपने 6 महीने पहले देना था, this money you have utilized, the government has utilized this money belong to me. Therefore, question before Supreme Court was that when there is no provision in the parent enactment like GST or income tax or central excise to pay interest on interest, can interest on interest be paid? Bombay High Court rejected the application. Okay, there is no such substantial provision in the Parent Act. Income tax case, no? I suppose. Therefore, this interest cannot be paid. Matter went to Supreme Court. Supreme Court said it is not a question of your principal enactment having a provision or not. Court says that did you utilize this money? The money belonged to the dealer, the taxpayer. You did not pay for 2 years or 3 years or 7 years. Now you pay interest. However, Because he was restrained from utilizing his own money. that is the principle. But Supreme Court said, okay, we will not give interest on interest, we will rephrase it as compensation. So instead of 18% claimed as per the Act, Supreme Court gave 9%. But Supreme Court gave. They filed a review, dismissed. Now the principle of the judgment is very simple. अगर आपके केस में 2 साल में आप अगर 2 साल बाद रिफंड किया, जो दिल्ली में 1 साल का तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ही, यहाँ पे सब इनकी 1 साल की है, पैसे देने के बाद 1 साल लगाते हैं या हाथों दे देते हैं? पैसे के बाद पैसे ही नहीं लेते ना साल तो 1 साल तक तो पैसे नहीं लेते, पैसे के बाद तो मिल ही जाएगा, पैसे के बाद तो मिल ही जाएगा। मतलब 1 साल में दे देते हैं या 2 महीने में दे देते हैं? डिपेंड करता है पैसे कब गए। So that is the law. That is the rule. That is the rule. So whatever. So अगर आपको उन्होंने 7 दिन के बाद रिफंड दिया है, आपका इंटरेस्ट का हक बनता है. Now when you file an application and attach the judgment, Union of India versus Park Lab, as Rahul ne said, we will show you PPT on these judgments. As sent to me, he will put it there. So उस पे इंटरेस्ट क्लेम करो कि now we want interest as per Supreme Court judgment at the rate of 9% in the form of compensation on the interest you have delayed. Take this acknowledgement. Let him deal with it. मेरा केस चल रहा है अभी ट्रिब्यूनल में. This tribunal member also jumped. कहते हैं वर्मा चक्रवर्ती ब्याज लेंगे आप गवर्नमेंट से? क्यों नहीं लेंगे? हम तो लेने के लिए कोर्ट में, हमने क्यों लेना है? But he said no. शशि पूजन जाए कहते ये क्या है? मैं कहती दिखाएंगे, हमने कुछ क्लेम किया तो कुछ बेसिस तो होगा. Then we argued. Then they said we'll seek instructions. मैं कहता I will take this. You reject Supreme Court? I have no intention. मैं कहता इनका मतलब ये एक्ट में प्रोविजन नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं एक्ट में प्रोविजन नहीं होने की जरूरत ही नहीं है. आपने मेरा 1.5 साल बाद 17 करोड़ का रिफंड दिया है, मेरा इंटरेस्ट आपने लेट किया तो मेरे को उसका पैसे. So this 60 days limitation given in 54(7) from the date of application complete in all respects is sacrosanct. But as most of us feel कि 7 दिन में refund automatic मिलना चाहिए, there is no provision like this. There is no deeming provision in the act. If refund in 60 days is not given, refund shall be deemed to have been given. ये ऐसा कुछ एक्ट में नहीं लिखा है. The only consequence for the revenues they don't give refund within 60 days is that section 56 shall operate, and you will have to give interest. Right? Let's go further. We still have time. There's time on this. 54(8). Most of the questions you will get, your question I raise karenge, now you get it. Notwithstanding anything contained in subsection 5. 5 is आपको refund देना है. The refundable amount shall, instead of being to the fund, be paid to the applicant if such amount is relatable to. तो section 57 में consumer welfare में आपको claim नहीं करना. Now under 54(8) he can give in cash. For this what purpose? For the following 6 purposes only.
refund of tax paid on export of goods services or both or inputs or input services used in making such exports. तो दोनों कवर कर दिया उन्होंने आपको क्लेम करने हैं. Refund of unutilized input as credit under subsection 3. Refund of tax paid on supply which is not provided either wholly or partially for which invoice has not been issued or where the refund voucher has been issued. That is, if you cancel a sale, supply, any supply you cancel, where tax invoice has not been issued or you have issued refund voucher, that is credit note. Refund voucher की definition है? Refund voucher definition है. Let's see what the refund voucher. एडवांस के टाइम पे लेते हैं ना. वोटर की रिफंड वोटर की नहीं, रिफंड वोटर की नहीं है. नो, वोटर की डेफिनेशन रिफंड वोटर की डेफिनेशन नहीं है. Refund of tax in pursuant of section 77. Go to 77. Tax wrongly collected and paid to central government or state government. Tax and interest given. Penalty is a willful disobedience of law. It may be criminal, it may not be criminal. So penalty is not taken as a part of tax scheme. The tax or interest borne by such class of applicants or as the government may so and so refund. इन चीजों में आपको कैश रिफंड मिलता है, बाकी किसी केस में आपको कैश रिफंड नहीं मिलता. So 54(1) and 54(1) proviso shall be applicable to these things. Right? Next. The government may disperse, forget it. Yeah, now subsection 9. मैंने नहीं लिखा यार. लॉ में लिखा हुआ है. अच्छा, लॉ में लिखा. ऑन एक्सपोर्ट उसमें हमें लिखा है कि अमेंडमेंट से पहले न्यू रेटेड सप्लाई लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट क्यों लिखा है? Because section 16 use the word export. Export is covered by zero rated. How is it defined? In section 16. So they have used the proper word now. Supply was the wrong word in any case. Because zero rating is not linked with supply, it's linked with export. Export includes supply. Supply will not include exports. Because exports is defined in section 16. Section 7 उसको निकाल कर section 16 में define कर दिया. और section 2 की जो definition clause वहाँ भी लिखा है, zero rate transaction means that defined in section 16. That's where they use the word. Good observation. Thank you. Notwithstanding anything contrary containing any judgment, decree, order or direction of the appellate tribunal or any court of law provisions act or where there are any other law provisions, no refund shall be made except in accordance with provisions of subsection 8. How will the court deal with this? आपको हाई कोर्ट कहता है इसको रिफंड दे दो. हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया, इसको 10 लाख रिफंड दे दो. प्रॉपर ऑफिसर कहते हैं जी ये 54(8) में कवर नहीं होता. What will you do? No court can order. Unless you challenge this provision is read down, you cannot usurp the powers of High Court or Supreme Court. Tribunal being a statutory authority, tribunal cannot give this order. The tribunal cannot bypass the law given in the Act. High courts under 226 or 227 they can. But there is a provision. ये provision पहले नहीं थे. तो कहते हैं notwithstanding contained in any judgment, decree, order or direction of appellate tribunal or any court or in any other provisions of this act or the rules made thereunder or in any other law for the time being in force, no refund shall be made except in accordance with the provisions of subsection 8. तो जो भी आपको रिफंड लेना है, अगर कोर्ट कहता है तो आपको सबसेक्शन 8 को पहले आर्गू करना है. सपोजिंग आपने सुरेश अग्रवाल जी खड़े हुए सर रिफंड बनता है, अच्छा आपका केस है गिवन ऑर्डर पास कर दिया, किसी रिफंड दिया था? तुमने कहा था हमें नहीं पता क्यों किया था. तो once you are in appeal etc always make out a case. That's why I read it कि you are covered by subsection 8, one of those 8, 6, 7 provisions. उस कवर करने के बाद आपको अपील बनानी है ताकि उसके ऑर्डर में आए कि अंडर so and so सब क्लॉज ऑफ सेक्शन 54(8) this refund is to be given, then refund will be given. अगर वो 54(8) की आपका ग्राउंड नहीं बनता तो आपको से मना कर देंगे. Because the proper officer cannot go against the law. But supposing High Court gives the order, High Court doesn't mention 54 subsection 8. Jurisdiction High Court's orders are binding. So unless this is challenged in Supreme Court and the stay is given, revenue will have to give refund.
So this notwithstanding clause will not operate on a High Court judgment. It will operate only in this act or any other law. It will, they say, contained in this act or any other rules. Once High Court says give, it cannot say it will not, it will also operate on High Court. No. They will have to challenge this case. This is ultra virus, the High Court powers. Challenge this. अब दिल्ली में जितने बैठ के रिफंड हुए हैं जो हाई कोर्ट को ऑर्डर पढ़ो सारे स्टैंडर्डाइज्ड ऑर्डर है, कई होते बिल्कुल सेम लैंग्वेज है, ये दे दो ये कर दो वो कर दो. तो अगर जीएसटी में को हाई कोर्ट को रिफंड ऑर्डर पास करना है, इफ आई एम द गवर्नमेंट काउंसिल आई विल से देयर इज नो प्लीडिंग ऑन 54(8), therefore this rate is not maintainable. किस बात का रिफंड मांग रहे हैं? तो लॉ में तो 54(8) के हिसाब से रिफंड होता है, कोर्ट को है ही. So subsection 9 can have a lot of problems, especially when you see both subsection 8 and both subsection 9, they are both beginning with notwithstanding. But subsection 8 becomes more relevant because this refers subsection 5, in which the proper officer has to determine the refund payable. So he cannot determine the refund of subsection 5 till he satisfies subsection 8. If you go to tribunal, they may remand the matter. बस और कुछ नहीं करेगा tribunal. If at all there is a tribunal in GST ever, we don't know. वो तो मोदी साहब बोले मैं ट्रिब्यूनल मेरे पास एप्लीकेशन डाल दो, रिफंड दे देंगे आपको. 10. We'll finish this today. Where any refund is due under subsection 3. So what is subsection 3? Zero rated inverted duty structure. Keep going back to section 3. All of you again go back to section 3 and read it. क्या मतलब है इसका? So then you will understand this provision better. Where any refund is due under subsection 3, to refund on account of export of goods or services or inverted duty structure to a person, not any person. Any person is only subsection 1. It's a drafting error in my opinion, but they have not amended it so far. To a registered person who has defaulted in furnishing any return or is required to, we have done this. ये सारा रिफंड आपका स्टे वगैरह नहीं है तो सारा आपका पैसा कटेगा. We have done this earlier. 11. Where an order giving right to refund is the subject matter of an appeal or further proceedings, or where any proceeding under this act is pending and the commissioner is of the opinion that grant of such refund is likely to adversely affect the revenue in the said appeal or other proceedings on account of malfeasance or fraud committed, he may, after giving taxable person an opportunity being heard, withhold the refund till such time as he may determine. बहुत बड़ी पावर है कमिश्नर को, but this is subject to jurisdiction. There should be malfeasance, उसका दिल खराब, उसका चोरी चकारी का मन होना चाहिए, और fraud. He will have to bring on record कि ये तुमने रिफंड क्लेम किया है, जहाँ फर्दर प्रोसीडिंग जहाँ हमने अपील आगे की है, हम आपको रिफंड नहीं देंगे, because you have committed these acts. Then you can withhold the refund. Now let's read it again after you listen the layman language. Where an order giving right to refund, आपने प्रॉपर ऑफिसर ऑफ गए, इलागर गई, 5% पैसे दिए, करोड़ का रिफंड ले लिया, राइट? ओपिनियन वर्मा जी के पास है कि सर क्या करना है, इलीगल रिफंड है. इलागर का केस है तो इलीगल होगा, पक्का बात है, इलीगल रिफंड रोको. सर 5000 में करा तो इलीगल 5% से लीगल हो गया, 5000 में इलीगल है. अच्छा 5% तो इलीगल है, 5% तो लीगल है. फेस वैल्यू 5000 पे कर रहा है, तो मैं इसलिए कह रही कि फेस वैल्यू पे कर रहा है तो बिना कुछ लेके कर रहा होगा. सेल्स डेस्क बाकी मेंबर एग्जीक्यूटिव में पैसे कैसे मांगे? फायदा है, बिल्ले लगाने का बड़ा फायदा. लोग लिखते हैं मेंबर एग्जीक्यूटिव सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन, जैसे कि पता है कि हिंदुस्तान के कहीं कुछ बन गए. बड़ा गवर्नमेंट काउंसिल भी लिखते हैं बड़े लेटर पे, गवर्नमेंट काउंसिल. अब स्पेशल काउंसिल तो मुझे उन्होंने कार्ड दिए बनवा के, दिल्ली गवर्नमेंट ने. आई बस 6-7 नहीं मुझे ये कार्ड तो नुकसान वाला है, फायदा वाला है ना, हमारे पैसे तो ना खाने, हमें नहीं बनना. हमारे सारे लिखते हैं जितने यहाँ गवर्नमेंट सब के लेटर में लिखा है गवर्नमेंट काउंसिल. हाँ तो गाड़ी के आगे लिखा है गवर्नमेंट काउंसिल. So where an order of refund, there should be an order first where refund has been given to you. Is the subject matter of an appeal. Revenue can also file appeal or further proceedings. What further proceeding? Under section 108, suo motu revision by commissioner. That is the meaning of a further proceeding.
or 73, 74, they are also proceedings. The refund has been erroneously given to you. So all three cases are covered by further proceeding, or where any other proceeding under this act is pending, उसके ऊपर कोई 132 का केस चल रहा है, जेल वेल हुई उसको, that is other proceeding. एक्ट में किसी भी सेक्शन में पेंडिंग है उसकी proceeding, and the commissioner is of the opinion, subjective opinion, but whose opinion? It has to be commissioner's opinion, not the commissioner of special commissioner, additional commissioner, joint commissioner. It has to be the opinion of the commissioner that grant of such refund is likely to adversely affect the revenue. So commissioner has to form an opinion कि अगर जो refund दे दिया गया, it will adversely affect the revenue. In the said appeal or the proceeding on account of malfeasance or fraud committed, he may withhold the refund after giving an opportunity of being heard to the registered person. So section 11, section 9, these are two very serious provisions of section 54. कोई कोर्ट 54 एक्ट के बिना आपको रिफंड नहीं दे सकता. देता है तो गवर्नमेंट कैन चैलेंज कि यू हैव नो जुरिसडिक्शन टू गिव रिफंड एक्सेप्ट एज पर सब क्लॉजेस ऑफ सेक्शन 54 सबसेक्शन 8. 12 is also very important. Where a refund is withheld under section 11, the taxable person, now there is no registered person. Why taxable person? Go to section 2. पढ़ो. Go back to section 2. Right? Who is registered or liable to be registered? Right? That is the meaning of taxable person. Taxable person shall, notwithstanding any containing section 56, be entitled to interest at such rate not exceeding 6% as may not even government, as if as a result of appeal of further proceeding it becomes entitled to refund. अगर फंड मिलता है तो 56 में उसको 6% ब्याज मिलेगा. लेंगे 18%, देंगे 6%, तो देंगे तो वो भी नहीं. But this is the mandate, no more than 6%. But Gujarat High Court and Bombay High Court in normal case of refund or quota they gave 9% refund. Challenge the Supreme Court, they refused to hear. They kept the question of law open, but that's the way we discussed. They gave 9%. It's an abnormal delay. तो 2 साल 3 साल आपने एक्सपोर्टर का रिफंड नहीं दिए शुरू में, लेकिन the mandate is 6%. 13 is also very important. No, see, all clauses of refund basically have been notwithstanding. तो उसको इंटरप्रिटेशन करते कोर्ट मर जाएंगे, इसका मतलब क्या निकालना? वो हर क्लास में नॉटविथस्टैंडिंग है. Notwithstanding contained is contained in this section, so this refers to entire section 54. The amount of advance tax deposited by a casual taxable person or non-resident taxable person under section 27(2), go back to 27(2). A casual taxable person or non-resident taxable person shall at the time of submission of application returns for 25 months make an advance deposit of tax. Right? So if he has deposited advance payment of tax, in whose case only CTP or non-resident taxable person, सिर्फ 2 केसों में, तीसरे केस में अलाउड नहीं है ये. Shall not be any contained section be entitled to interest at such rate not exceeding 6%. Sorry. 22 shall not be refunded unless such person has in respect of the entire period for which a certificate of registration granted to him had remained in force furnished all the returns under section 39. अब यहाँ भी बहुत बड़ा कैच है. कैजुअल टैक्सेबल 90 180 दिन मैक्सिमम होता है मेरे ख्याल, क्या 90 180 दिन होता है टोटल. अब उसने आपको 10 लाख रुपए टैक्स दिया, सपोज उसने कोई सेल दी, उसका कुछ साल पे घुसा ही नहीं, मुझे श्री वर्मा कहते लार बार के खड़े कर दिया 2 किलो वाले मिल जाने का चलो. अब वो कहते हैं आपको रिफंड नहीं देंगे जब तक सेक्शन 39 के रिटर्न नहीं भरेंगे. राइट? नाउ सेक्शन 39 हैज अ लिमिटेशन. Right? But here when we read this provision, it doesn't talk of a limitation. It only says section 39 returns. That is valid returns. Section 39(1) uses the word valid return, not return. So till he files the return, he cannot get refund. Right? Now let's read 11 again.
12. Taxable person and CTP and non-resident both are taxable persons. Therefore, इनको भी 6% ब्याज मिलेगा if the money is found in excess. 14. Notwithstanding, anything contained in section, no refund under subsection 5, that is as determined, or section 6, the 90% wala, shall be paid to the applicant if amount is less than 1,000 rupees. बात खत्म होगी. Now explanation is more crucial than the provision. Explanation applies to the entire section. Refund includes refund of tax paid on zero supply of goods or services, or both, or on inputs or input services used in making such zero rate supplies. That is why the formula comes, because the explanation section 54 itself restricts that you will get refund of those goods or input services which you make in zero rate supplies. Since it's impossible to determine practically, they have found out a formula कि okay इस हिसाब से इसको adjust कर देते. Though the formula is against the dealer. I think Rakesh Garg had done some calculation which you were discussing, मुझे समझ नहीं आई. But he had made a he says you lose around 6-7%. तो कॉमन क्रेडिट तो चलो उसके थ्रू आपका चला जाता है, पर जो डायरेक्टली चीज एक्सपोर्ट हो रही है, फैब्रिक से गारमेंट बनाया गया और गारमेंट एक्सपोर्ट हो रहा है, फैब्रिक. See again, nobody has challenged this explanation. This explanation to section 54 remains on record. You are bound. अब रूल 89 को गुजरात हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया, उन्होंने कहा कि अल्ट्रा वायरस, वहां भी एक्सप्लेनेशन को चैलेंज नहीं किया गया. They challenged that formula, which Gujarat High Court struck down, but Supreme Court said yes, there is no problem. But they said look into the government will never look into it again. So refund includes a fund of tax paid on the supplies of goods, services, or both, or inputs and services used in making such supplies, or refund of tax on the supply of goods regarding that deemed export, or refund of unutilized input credit provided subsection 3. बस यही 4 रिफंड मिलते हैं आपको, ये और पेनल्टी नहीं है. So your case was the penalty is a kind of a pre-deposit. Now relevant date. You'll have to finish this. Relevant date means, so it means only what is written here, nothing else. In case of goods, so first is subclause A is in case of goods, not services. In case of goods exported out of India where a refund of tax is available in respect of goods themselves, or as the case may be the input and services used in such goods, if the goods are exported by sea or air, the date on which the ship or the aircraft in which such goods are loaded leaves India, that is called manifest. जब एक्सपोर्ट में मैनिफेस्ट बन जाता है, ship is supposed to go, हवाई जहाज is supposed to go. It may not go. सबको कोविड हो गया, but once you have a manifest, that's your relevant date. तो आपको 2 साल जो मिलने हैं उस डेट से मिलने हैं, not when ship actually leaves. No. Once manifest goes, because your goods have been loaded, all formalities are complete. Therefore, 2 years from that period. If the goods are exported by land, the date on which such goods pass the frontier. आप ट्रांसपोर्ट से निकल गए, खत्म होगी बात. If the goods are exported by post, the date or dispatch of goods by post office concerned to place outside India. जब आपके पास postal fleet आ गई, 2 साल आपको तब से मिलना है. So whenever you confront the export of goods by any of these modes of transport, you have to apply the relevant date accordingly. Right? The dates will differ in every case. आपका एक्सपोर्ट बिल है 1/4 का, मैनिफेस्ट हुआ 1/6 को, 2 साल आपको 1/6 से मिलने 1/4 से. There are cases by some people who have applied the relevant date based on tax invoice. So many people did not even claim refund, they were told this time back. I know a number of cases in our part. मोटे-मोटे 8-10 लाख वाले कुछ लोग आए थे, हमारी टेबल पे आए. हमारा एक दोस्त है कि ये क्या किया, कहते यार उसे पढ़ाई नहीं थी, उसको पढ़ा दिया तो 10 लाख रुपए गए, बाय बाय होगी, छुट्टी होगी. Right? So this is first relevant date. Second is in case of supply of goods regarding the deemed export, very different. Deemed export दिल्ली में इतना है नहीं, let's leave it. Services बहुत important है ये, बहुत dedication है इस particular subclause पे. In case of services exported out of India,
So what's the sort of service? Go back to section 2 subsection 6. पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो तुम्हें समोसे मिले हैं, गुलाब जामुन मिले हैं, मिठाइयाँ मिली हैं, प्रसाद मिला है, चाय मिली है। इतना तो शादी में नहीं मिलता खाने को यार। और आप सबने खाया, लोगों ने 3-3 4 गुलाब जामुन खाए, तो मोटे-मोटे सबने 2-2 3-3 गुलाब जामुन खाए। So these 5 conditions need to be satisfied before you say this is export of service, right? Especially with regard to the place of supply and the payment having been received in convertible foreign exchange or in INR as may be specified by Reserve Bank of India. किसी INR पेमेंट को आप नहीं मान सकते। INR पेमेंट तभी मानी जाएगी जब RBI ने परमिट किया। RBI का नोटिफिकेशन मास्टर सर्कुलर आता है इनका, उसमें लिखा होता है क्या क्या करते हैं ये, तो लाइक हर कंट्रीज में अलाउ करते हैं। Where a refund of tax is available with respect to services themselves or as the case may be the input in services using such as the date of receipt of payment of convertible foreign exchange or INR permitted by RBI with the supply of services has been completed prior to receipt of such payment. ये relevant date है कि किसी ने मिस्टर वर्मा को हायर किया नहीं, हमारे 5 कॉन्ट्रैक्ट बना दीजिए, हमने बना दिए, उनको दे दिए, पेमेंट आ गई। पेमेंट मेरे कॉन्ट्रैक्ट के बाद 2 महीने के बाद आई, तो 2 महीने के बाद मुझे 2 साल मिलती। दैट इज द रेलेवेंट डेट व्हेन आई रिसीव द पेमेंट इन कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज और इन कन्वर्टिबल INR subject to RBI permissions where the service has been completed prior to payment. So you have to read the last 4 words first, then read the further things. Wherever there is a limitation, always first read limitation. बाकी चीजें बकवास हैं, you can understand. But limitation is more critical कि limitation में कहाँ फंसे हम लोग. Second is issue of invoice where payment of services has been received in advance prior to date of issue of invoice. Issue of invoice where payment has been received in advance prior to issue of invoice. 2 साल. यानी कि पेमेंट आपके आगे 2 लाख पहले आ गई, आपने सारा काम कर दिया, आप आपने इनवॉइस बनाया, इनवॉइस के बाद 2 साल आपको मिलती है रेलेवेंट। दैट इज रेलेवेंट डेट इन दी सब क्लॉज रोमन 2 डी। इन केस में द टैक्स बिकम रिफंडेबल as a consequence of judgment, decree, order or direction of a tribunal record court the date of communication of such judgment, decree, order or direction. Now this does not mean that this provision overrules subsection 9. सबसेक्शन 9 से कि कोई भी कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेंगे अगर सबसेक्शन 8 में रिफंड नहीं बनता तो। सो दिस पर्टिकुलर सब क्लॉज डी प्रीसपोजेस इट satisfies the requirement of section 54 subsection 8. मतलब it doesn't interfere with the subsection 9. इसका उससे कोई लिखा भी इसमें कुछ नहीं है। So in case where tax become refundable as a consequence of judgment, decree, order, or direction of the tribunal, appellate tribunal can the date of communication of such judgment. Now communication is a huge word. आजकल ऑनलाइन है, जिस दिन आपके पोर्टल में लिखे दैट इज डेट ऑफ कम्युनिकेशन, यू मे सी इट एनी टाइम, दैट्स योर्स। सिमिलरली जो जीएसटी ऑर्डर्स आते हैं आपको पोर्टल में आ गया, सर्विस इज कंप्लीट, देयर इज नो एफिडेविट सर्टिफाइड कॉपी, बकवास कुछ नहीं है। लॉ में है आईटी एक्ट के जो सारे प्रोविजंस हैं वो जीएसटी में लागू होते हैं। सो दैट इज व्हाई दे हैव नॉट यूज्ड द वर्ड सर्विस, दे यूज डेट ऑफ कम्युनिकेशन। Communication includes knowledge and service, but you cannot say it was not served upon us. तो जमाने खत्म हो गए। अगर जजमेंट आपने पोर्टल ही नहीं खोला है, सपोज पोर्टल में आगे किसी ने पोर्टल ही नहीं खोला, एसएमएस से साथ आता है ना, वो प्रोसीजर फोन पे एसएमएस आता है, मेल भी आती है। सुसाइड वैसे भी रिफंड रिलेटेड ऑर्डर तो खुल ही जाएगा पोर्टल अपने आप, पहले ही पता होता है क्या ऑर्डर घूमते रहते हैं डूबे जाके क्या हमारे ऑर्डर क्या हुआ। बट ही इज राइट, देयर आर मेनी पीपल डोंट नो, बड़ी कंपनी डू बॉदर कहां क्या हुआ। नेक्स्ट, इन केस ऑफ refund, this is amendment in February 2019. In the case of refund of unutilized ITC under subclass 2 of the first proviso of subsection 3, the due date for furniture return section 39 for which in which such claim or refund is. Let's go to 3.2 subsection 3.2. क्या कहते हैं? Yes, where the credit has accumulated. तो भी अब क्या कहती है ये प्रोविजन
In case of refund of unutilized fluid, the due date for furnishing return section 39 for the period with such claim or fund arises. तो अगर आपका क्लेम जनवरी में रिफंड हुआ और आपकी क्वार्टरली रिटर्न है और आपको कब देनी है, 20 मई तक कि 20 अप्रैल तक? 20 अप्रैल, इसके 2 साल कैसे रेलिवेंट है? पहले सर ये इसमें नहीं था। अच्छा आप डाला है, तो पहले कंफ्यूजन था। पहले कंफ्यूजन था और उसमें भी सर ये था कि पहले 3B सेक्शन 39 के अंदर पहले तो बहुत क्योस था। मैंने एक बार एक पता नहीं पंजाब टैक्स बार को दिया था, बहुत क्योटिक था। आप भी बहुत सारा स्ट्रीमलाइन हो गए। अच्छा बना दिए। See why I did not put PPT? PPT becomes a one-way communication. So then the whole purpose of the class goes. आपको जो पढ़ने की आदत पढ़नी नहीं थी, अब सारे एक्ट लेके आते हो ना, काफी भी लेके आते हो। बच्चों की तरह पढ़ना है, हमको सबको पढ़ना है, बच्चों की तरह ही पढ़ना है। Otherwise PPT is somebody reading, so just one way kind of a thing. Now we're interacting, we're enjoying it. Next, in case where tax is paid provisionally, section 60, under this act, for the rule made thereunder, the date of adjustment of tax after the final assessment thereof. This is only section 60, nothing else. Next, in case of a person, now it's a person, other than the supplier, the date of receipt of goods or services by both of such person. That is, a recipient can also claim a refund. That is why I told you subsection 1, any person. A person includes the recipient. Otherwise, is taxable person or restricted person? A person may not be taxable. So in this case also, they have given a relevant date. In case of a person other than supplier, the date of receipt of goods or services or both by such person, and in any other case, the date of payment of tax. तो किसी भी केस में जब आपको रिफंड क्लेम करना है, अगर तो आपके पास 2-3 महीने के बाद आपको देखने पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ने की जरूरत है व्हेन यू आर ऑन अ बॉर्डर लाइन, फिर आपको पढ़ना है। पहले आपको पढ़ना है 54(8). क्या आपका रिफंड वहां कहीं कवर होता है? 99% will be covered, but you still go through it. There may be a catch. You never know. I know a case in Delhi, in VAT, where the TDS certificates given by UP department were given benefit here in Delhi. Special zone, 3.5 crore रुपए के. Some report came, they were audited, their officer was suspended. मतलब TDS सर्टिफिकेट यूपी के कटे हुए हैं, क्या रिफंड देगी? तो रिफंड में भी अभी बहुत सारे ऐसे केसेस निकलेंगे where you will see कि ये इसमें कवर होता है, नहीं होता, then you talk to the client. Sir, our view is this. Do not file refund if it is not available. Just for the sake of making money, you will be doing injustice to your own profession if you do this. Why I have read this section 54 personally is only for this simple reason: you must understand that this is the way to read a law and to decide refund. अगर बना के चलोगे आपका रिफंड को रोक नहीं सकते. All the documentary evidence, all the claims that were made in return, they must be supported by your documentary evidence. The return cannot be revised. अगर आपको रिटर्न रिवाइज करनी है, since return being a self-assessment order, you can appeal against that return in section 107. Because section 58 says this is self-assessment order. This was done by Supreme Court in case of ITC versus State of West Bengal, where the issue was this only. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने बिल ऑफ एंट्री जब फाइल किया विद इन सेल्फ असेसमेंट ऑर्डर, रेवेन्यू के पास टाइम था, आपके पास टाइम था, अपील करते. अब सब्सिक्वेंट यू कम टू नो कि यू हैव पेड मोर ड्यूटी, इस टाइम बाद कैन नॉट क्लेम रिफंड. उन्होंने बोला कि बिल ऑफ एंट्री सिंस बाय सेल्फ असेसमेंट ऑर्डर यू कुड हैव अपील्ड अगेंस्ट इट. पहले हमारे सेक्शन 28 में ऑब्जेक्शन होते थे ना वैट में, वहां प्रोविजन था, इसमें कोई जरूरत ही नहीं है. रीड सेक्शन 107 just for 1 minute. You get a logic. Any order agreed, any person agreed by any decision or order passed under this act. So once you file a return, you get acknowledgement. That is an order passed under this act, because that is a self-assessment order.
any person. I was telling you yesterday, supposing some observations are made against Sushil Verma in an order, I have a right to appeal. You cannot implicate me for this. Appellate body will have to hear. That is by any person aggrieved. Not taxable, not registered. They have not used this word, they have used any person. So person, if I am included, it's inclusive definition. So any person. So friends, we stop here for refunds. We'll finish it tomorrow. And tomorrow we also start 107 appeals. और फिर क्या रिफंड मिलेगा? हाँ, अगर आपने कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, you can take cash refund. But if you pass on the tax incident, then दोनों का है ना नीचे? हाँ है। सेक्शन 61 पढ़ो, दोनों कवर्ड है बेटा, दोनों कवर्ड है। दोनों कवर्ड। केयरफुली। अरे इतनी ऐसी लड़की को आज